I make a lot of mistakes while speaking English. Hello friends, this is Janpa Mathur here, and in today's video we are going to discuss this issue. I make a lot of mistakes while speaking English language. Friends, you know what? When I was a complete beginner and I just wanted to talk to somebody in English language, so I used to think that I'm going to talk to somebody, and if I commit any mistakes, so what would happen that time? Actually, you know what? I always used to think about my mistake. Like when I'm going to talk to somebody and I would commit a mistake, so what would happen that time? So I was always worried about my mistake. I was always thinking about my mistake, and I never tried to speak. So guys, if it happens to you, like when you want to speak somebody and you think that when you are going to talk to somebody, so you commit a mistake, so never think like that. Because you know what, if you want to talk in English language, so you, whatever you have knowledge, what knowledge you have gained since your childhood age, just with the help of those things start speaking in English language. If I talk about me, I had always a lot of things regarding English language, like direct narration, direct speech, indirect speech, voice, idiom phrases, many vocabs, and you can say that proverbs. And in spite of having all those things, I was always thinking about my mistake. It does not mean that when I went to talk to anyone and I committed mistake, I made mistake. No, it never happened like that. I always used to speak correct English. Like when I speak, I always used to speak English very correctly. Actually, whatever I had, I just used to speak with the help of grammar. Without grammar, I never spoke. But in spite of that, I was not very fluent in speaking. I used to speak only one sentence, two sentences, and when I wanted to speak more sentences, I just and when I wanted to have a conversation, like a long topic, when I wanted to discuss, I only thought in my mind that what would happen when I commit any mistake. So people definitely will going to laugh at me, they will comment me, they will criticize me, a lot of things, like psychological things. There was a psychological feeling in my mind, always exists in my mind. But you know what, friend, I one day I determined that whatever would happen, I have to speak English language. So I just started speaking. I just avoided my mistake. I just ignored my mistake, and it will happen to you. You know what? When if you think that while speaking you commit mistake, okay, you make mistake while speaking, and you just want to be fluent. So in one day you are not going to be fluent. By committing mistake day by day, and by improving those mistakes again and again, you will improve your communication skill. You will get to know how to speak, and it happens. And इसी तरह सबके साथ होता है. It happens for everyone who is willing to speak English language. There are many persons who thinks that first they will gain knowledge, grammatical knowledge, and after that they will start speaking. First they want perfection in their grammatical area, and after that they think that they will start speaking. So it would never happen. What happens to us, it's a psychological thing. What happens to us, skills could be any, like singing, dancing, cooking, driving. There are so many skills in this world. So in order to learn any skill, be people first try. Okay, be people first try, and try is the first step. कोशिश पहली स्टेप होती है. If we are not trying to do anything and only people think that one day we will perfect, so it never happens like that. ऐसा कभी नहीं होता. पहले क्या करना होता है ना, पहले हमें फर्स्ट स्टेप लेनी होती है. और कहा भी गया है, इट इज राइटली सेड दैट इफ जो फर्स्ट स्टेप होती है वो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है. यानी कि फर्स्ट स्टेप इज द बिगिनिंग ऑफ 1000 मील. यदि हम 1000 मील की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप लेना होता है, तभी हम अपनी 1000 मील की यात्रा कर सकते हैं. तो यदि हम ये सोचते हैं कि हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम क्या करें? क्या हम बोलना बंद कर दें? नो. इफ यू थिंक दैट इफ यू कमिट मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग, एंड इफ यू थिंक दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग and the day you will get perfection and after that you will start speaking, so it will never happen. ऐसा कभी नहीं होगा. आपके पास जो है, जो भी टूटी फूटी, जो भी ब्रोकन इंग्लिश आप जानते हैं, उसके हेल्प से आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए. और गाइस, आई एश्योर यू दैट डेफिनेटली यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक.
गलतियों से ही हम सीखते हैं। और हमें क्या करना है, हमें गलतियों को अवॉइड करना है। हमें हमें हमेशा गलतियों के बारे में नहीं सोचना है कि हम बोलेंगे तो गलती कर देंगे, बोलेंगे तो गलती। क्यों इतना सोचना, क्यों, किस लिए इतना सोचना? क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई सीखना चाहता है। एक्चुअली इंग्लिश हैज बिकम लाइक such a kind of language that it has become a cooperative language. It has become a standard language. So everybody is willing to speak this language, and we have to expose ourselves to learn this language. We have to expose to the environment of English language. Like we have to watch something, we have to read something, we have to write something, we have to listen something, and only in English if we want to improve our communication skill, if we want to avoid doing mistakes. Since morning to we only listen our regional language in the family where we are. Nobody speaks in it. If I talk about it, there is no one who speaks in English language. There is no one with whom I can talk in English language. There is nobody. Everybody speaks in Hindi language. In spite of that, I got to know that how to speak in English language only by practice. Only by I practice every day of speaking. I practice every day. So this is the only one. This is the only one key: practice, 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 practice. The more you practice, the better you become. You know what, guys? One day you commit mistake. Okay, if you are speaking, I am going to school. I am going to school. This sentence is very correct. But if you are speaking, I am instead of speaking, I am going to school. If you spoke, I am going to school. And if you are exposed to English environment and you are listening like I am going to speak, so definitely you will get to know that no, my sentence was incorrect. I have to improve here. I have to improve. I have to speak here. And instead of I are going to school, I'm going to school. So you will automatically correct your mistake. And it happens with the passage of time. With the passage of time, you will get to know how to improve yourself, how to improve your mistake. So you know what? Just if you really want to command over English language, just avoid your mistake. Just ignore your mistake. Mistake is a life. You know what? Mistake is the first step. You know what? By mistake, people learn something, any skill. In order to learn any skill, people commit mistake first and foremost, and after that get to learn. हम सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं. Error is human. कहा भी गया, एरर इज ह्यूमन. तो देयर इज नो वन, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो. एवरीबडी कमिट मिस्टेक. गलतियां हर कोई करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन शुरुआत में गलतियां सबसे होती हैं. तो हम सिर्फ अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये मेरे साथ हुआ है. अगर मैं किसी को देखती हूँ कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी से इंग्लिश में बात करना चाहती थी और अगर मैंने देखा कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो मैं मेरे अंदर करेज नहीं हो पाता था मैं उससे जाके बात कर सकूं. एक अजीब सी ट्रेम्बलिंग होने लगती थी कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू टॉक, मैं नहीं बात कर सकती. आई एम नॉट कैपेबल ऑफ टॉकिंग, नहीं बात कर सकती. लेकिन क्या, अगर आप खुद को ठान लें, अगर आप डिटरमिन कर लें कि नो, एनी हाउ आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही बोलना है, डेफिनेटली गाइस आई एश्योर यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक. और आपके दिमाग में जो है कि मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश में इंग्लिश में बात करता हूँ तो मेरे से गलतियाँ होती हैं, तो आप उस गलतियों पे ध्यान ना दें, उसे अवॉइड करें. अवॉइड करते हुए आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ें. आप एक गलती करेंगे, उससे सीखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर नेक्स्ट गलती करेंगे, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे. तो आप अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते करते आप सीख जाएंगे और आप इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आ जाएगी. आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे. एक लैंग्वेज की तरह है इंग्लिश. एक लैंग्वेज, आपको सब्जेक्ट तो करना नहीं, सब्जेक्ट तुमने बचपन से पढ़ाया, तो आपको एक स्पीकिंग करनी है. इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह लेना है. आपको एक लैंग्वेज सीखनी, लैंग्वेज में बात करनी है. तो बात करने में क्या है, आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि हमें ज़्यादा ग्रामर के डेप्थ में नहीं जाना है. ओके, यू हैव टू कन्वे, आपको कन्वे करना है. यू हैव टू कन्वे योर आइडियाज, आपके अपने आइडियाज को कन्वे करना है. यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, अपने थॉट्स को आपको एक्सप्रेस करना. दिस इज द थिंग. यही चीज़ है जो हमेशा हर एक लैंग्वेज में होती है कि हम किसी से बात करते हैं तो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं. तो हमें इंग्लिश में भी लैंग्वेज में यही चीज़ सोचनी है. ज़्यादा ग्रामर के डेप्थ में नहीं जानी है, अपने मिस्टेक के बारे में नहीं सोचनी है. जो लोग ज़्यादा अपने मिस्टेक के बारे में सोचते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. मैंने भी जिस दिन से मिस्टेक को अवॉइड किया, इग्नोर किया, मैं भी बोलना सीख गई. तो मैं भी बोल रही हूँ आपसे, जरूरी मैं भी बहुत परफेक्ट हूँ. आई थिंक मैं भी बहुत कुछ ना कुछ मिस्टेक मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ. तो
तो हर कोई मिस्टेक करता है, बट ऐसा नहीं है कि उसे बोलना नहीं आएगा। जो मिस्टेक करता है, मिस्टेक ऑटोमेटिकली पता चलता है और इवेंचुअली हम सीख जाते हैं। तो गाइज, आप अगर इंग्लिश में डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू बी अ कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर, सो स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। इसी तरह मैं आपको बाय करती हूँ। बाय बाय।